So in the same sequence, let's begin with I.A. Richards. How many of you have studied I.A. Richards today? Just raise your hand or write me in the chat box. How many of you have read I.A. Richards? Okay, great. So I have one question from you. The first question is, how many chapters are there in the work that you read today? How many chapters are there in Principles of Literary Criticism? Okay, someone writing 35, Ankita 37, Dr. Ariman says 35. What about others? Everyone has read that? 35. ऐसा लग रहा है बाकी लोगों ने पढ़ा ही नहीं. The intention of telling you the topic in advance is that you should do a basic study and then come to class so that the things will be more clear to you, isn't it? Okay, so let's see. Mock test का tension था. Okay. Okay, चलिए फिर excuse चलेगा. So this is the original text. I'm just opening the original text, Principles of Literary Criticism, and I think all of you are able to see this. It's the 4th edition of the text. And here we will see how many chapters are there. Okay, so those who are writing 35, Sonal, Sadini, yes, it is absolutely right. So from this original text, I have taken all the informations of today's class. This PDF is almost of 351 pages. Such a big work he has written. And it is very difficult for me to take out all the important things. Almost I spent 7 to 8 hours today to analyze all the important questions, previous papers, to find out what is important out of this. Okay, great. So now if you have downloaded, that's great. You can go through it if you have enough time. But what I feel is the information that I am going to give you about I.A. Richards will be more than sufficient, and you need not to go through in too much of detail. Otherwise, it will be a headache for you. Okay. So first of all, let's know about the year of publication. Principle of Literary Criticism was published in 1924, and it was developed as a closely reasoned theory of mind response to rhythm and meter. यहाँ पे हम एक चीज जान लें इसके पहले कि ये जो टाइम चल रहा था 1920s का, इस टाइम पे क्या क्या चल रहा था. Because if we understand something from the cultural point of view, or I can say new historicism point of view, so cultural context, political and social context, सब कुछ हम देखेंगे तो it will be very easy for us to understand this work, Principle of Literary Criticism. So ये जो टाइम था यहाँ पे 1899 में एक बहुत ही फेमस वर्क पब्लिश हुआ था सिगमंड फ्राइड का. Can you write the title in the chat box? So apart from that work, Sigmund Freud has published so many works during 1900 to 1920. No, Interpretation of Dreams nahi tha. The first work which was published is, I'll give you the clue, it was about hysteria. Okay, now you write the full title. This was the first work which was written by Sigmund Freud about psychoanalytical study. Okay, the full title was Studies in Hysteria. Yes, Swati, absolutely right. So ये जो पीरियड चल रहा था यहाँ पे बहुत सारे साइकोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे थे. इसी में ऑलमोस्ट 1912 के आसपास एक मूवमेंट आया था which was also a psychological movement. I think 1913, not 1912. It was 1913. Which was that movement? Anyone? Which was related with the psyche of the human beings, study of mind. Anyone? No, it was not a Great Depression. No, not a Great Depression. Surrealist movement. Okay. Now I hope you are able to recall Surrealist movement that was started in 1913.
This was also an influence of the psychoanalytical movement of Sigmund Freud. Surrealism का मतलब था सुपर रियलिटी, रियलिटी के बियॉन्ड, रियलिज्म नहीं, रियलिज्म को नहीं स्टडी करना है, सुपर रियलिटी। इसका मतलब वो चीजें जो माइंड से निकल रही है, जो भी माइंड में हमने सोचा, चाहे वो रियलिटी हो चाहे नहीं हो, उसको हमने फॉलो किया, दैट इज सुपर रियलिज्म। तो ये पीरियड ऐसा था जिसमें पोइट्स ने सरलिस्ट मूवमेंट को फॉलो किया, जो दिमाग में आया, जो मन में आया वो लिखा, whether it's a reality or not, super reality, surrealism, study of mind. So यहाँ पे दो मूवमेंट, एक surrealist movement और दूसरा है psychoanalytical movement by Sigmund Freud. This both the things has put a lot of impact on the students of the time. उस टाइम के जो स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर काफी गहरा असर पड़ा था, और I.A. Richards was one among them. So I.A. Richards was a student of psychology and philosophy. He was a student of psychology and philosophy along with literary forms. And he concluded that poetry performs a therapeutic function by coordinating a variety of human impulses. Poetry जो है थेरेपी का काम करती है, therapeutic function, थेरेपी का काम करती है। थेरेपी मतलब आपको कुछ रोग हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, so you will get recovered through the therapy. So how it is acting as a therapy? By coordinating a variety of human impulses. ढेर सारे impulses को coordinate करके, impulses जो होते हैं जो आपको excite करते हैं, आपको ignite करते हैं कुछ करने के लिए, they are the human impulses. So when the human impulses are coordinated with each other, they create an aesthetic whole. Aesthetic जो pleasure मिलता है, that is because of coordination of the human impulses. And they not only help the writer but also the reader. And they maintain their psychological well-being. Both of them are able to maintain their psychological well-being. How writer and how the reader? दोनों अपने साइकोलॉजी को मेंटेन कैसे कर पाते हैं? लाइक अगर मैं यहाँ बैठ के आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, आपको इंस्पायर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या आपको नहीं लगता कि पहले मुझे मोटिवेटेड होना चाहिए, तब मैं आपको मोटिवेट कर पाऊंगा? अगर मेरे अंदर ही मोटिवेशन नहीं है, मैं ही मरा मरा सा आके बैठ गया क्लास में, विल आई बी एबल टू मोटिवेट? सर्टेनली नॉट। तो पहले तो ये जरूरी है कि मैं एक ऐसे कंडीशन में हूं, मैं अपने आप को इतना एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड रखूं ताकि मैं जो बोलूं देन इट विल बी इन्फ्लुएंसिंग यू। सिमिलरली, if writer himself is not psychologically well, if he is not psychologically strong, then how he will make his reader to do that? So when he is able to coordinate the varieties, when he is able to coordinate the varieties of human impulses, that means he himself is in the highest state of his psychological well-being, and then only he will be able to make his reader follow the same. So it is helping both the writer and the reader both to maintain their psychological well-being. So here this is he is giving the function of poetry. Poetry का function क्या है? According to I.A. Richards, this may be asked in the exam. What is the function of poetry according to I.A. Richards? So poetry performs a therapeutic function. Very important point. It performs a therapeutic function by coordinating varieties of human impulses. That's all you need to make a note of this. Okay. So why he is talking about poetry from the psychological point of view? अभी तक हमने जितने definition पढ़े थे poetry के, nobody was talking from the psychological point of view because psychology का कोई existence नहीं. Psychology तो Sigmund Freud के बाद ही आया. So when the psychology came, the people, I.A. Richards started thinking about the meaning of poetry, language of poetry, language of a critic, function of criticism from the psychological point of view. तो ये पूरा का पूरा जो book है, Principles of Literary Criticism, it's a psychological or I can say psychoanalytical interpretation. It is totally a psychoanalytical interpretation of I.A. Richards, which is written in 35 chapters. Total there are 35 chapters.
The first chapter is entitled The Chaos of Critical Theories. The Chaos of Critical Theories, which start with a quotation that is taken from Shakespeare's Henry IV, Part 1. Okay, he has taken a quotation, and the quotation is, "O monstrous, but 1/2 penny worth of bread to his intolerability of sack." Okay, this is the opening line of the first chapter, which has been taken from Henry IV, Part 1. Okay, so all of you, those who have written 35 chapters in the answer, is absolutely right. And I appreciate you for your effort that you put before coming to the class. This is what effort is required. जब आप कुछ पढ़ के आते हैं, I feel very happy that at least you have done some homework. So, I.A. Richards was heavily influenced by Sigmund Freud, Alfred Adler, and Carl Jung. These were the famous psychologists during that time, who has inspired I.A. Richards. So this question also may come, that he was inspired by whom? He thought that literature is all about the experience of the reader, and the way that reader reacts to the text is explained through psychology. Sir, full name of Adler? Haji? Adler. Alfred Adler. Sigmund Freud, Alfred Adler, and Carl Jung. Can you explain Adler about things Adler? अल्फ्रेड एडलर की जो एक बार मैंने बात किया था when I was talking about psychoanalytical theory, अभी आपको याद आएगा when I was talking about inferiority complex. अल्फ्रेड एडलर का जो प्रिंसिपल था वो inferiority complex के ऊपर था कि हम लाइफ में आगे तभी बढ़ेंगे जब हम अपने आप को कभी एक बार inferior फील करें, तभी हमें पता चलेगा कि superior क्या होता है. So when we are having the feeling of inferiority complex, then only we will strive to get the success. And because of that idea, he got separated from Sigmund Freud. Because Sigmund Freud का कहना था कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें we will have to connect with sexuality, libido theory. हम जो भी अपनी जिंदगी में करते हैं, that is because of our sexual drive. So his idea was completely different from Freud, so he got separated in 1912. 1911 में कार्ल यूंग सेपरेट हो गए थे और 1912 में अल्फ्रेड एडलर उनसे अलग हो गए थे. And they all the three have their own concept. Carl Jung ने individual psychology दी, अल्फ्रेड एडलर ने inferiority complex की psychology और Sigmund Freud ने libido की theory. Yes, Pragya, absolutely right. Inferiority complex and analysis. So I hope इतना अब कुछ याद आ गया होगा. Yes, sir. Thank you. Okay. So what is the relation between literature and psychology? ये एक ऐसा टाइम चल रहा था जहां पे आप देख रहे हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी स्टार्ट हो गई. So I.A. Richards was the first person who brought psychology into literature. आजकल बहुत सारे psychoanalytical research होने लगे हैं, but I.A. Richards was the first one who talked about literature from the psychoanalytical point of view, and he said कि दोनों के बीच का रिलेशन क्या है. He said कि literature जो है ये एक रीडर का एक्सपीरियंस है. It is all about the experience of a reader. लिटरेचर किस लिए लिखा जाता है? ताकि लोग पढ़ें, अदरवाइज लिटरेचर लिखने का क्या फायदा? So whatever the reader is feeling the experience, and after that feeling जो उसने पढ़ा फिर वो उसको अडॉप्ट करेगा अपनी पर्सनालिटी में, कुछ सीखेगा. बिकॉज बहुत जगह हमने पोइट्री में पढ़ा थे कि the ultimate end of poetry is not only to give the pleasure but also the moral lessons, transport. जब उसे moral lesson मिलेगा तो वो रिएक्ट करेगा, and that reaction may be explained through psychology. So that is the relationship between literature and psychology. So now let's have a look at the chapters. क्या क्या chapter हैं इसके अंदर? We are not going to read all the chapters, I tell you. I'll only be discussing some important chapters only. Otherwise, it will take a year together to finish this book. The first chapter is the chaos of critical theories. And for our purpose, the language of criticism
third chapter, it is important. And the critics concerned with value, a psychological theory of value. He is talking about value, moral values, art and morals, actual and possible misapprehensions, poetries for poetry's sake, a sketch for a psychology, and rhythm and meter, which is important. आप चैप्टर का नाम एक बार देख लेंगे तो जब एग्जाम में कुछ अगर ऐसा आता है तो वी विल हैव अ क्लियर कट आइडिया. And coming to next chapters, chapter number 20, the impasse of musical theory. Chapter number 21 is a theory of communication. Chapter number 22 is the availability of the poet's experience. Chapter number 23 एक important है, यहाँ पे लियो टॉल्स्टॉय की एक theory जो थी वहाँ पे डिस्कस किया, लियो टॉल्स्टॉय's infection theory. And chapter number 25 is badness in poetry. Okay, ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन से चैप्टर का क्या नाम है. Okay, so don't spoil your time remembering all these facts. They may ask you how many chapters are there, and they may ask you ki, which among the following is not a chapter in this work. So levels of response and the width of appeal, that is important one. Then he's talking about imagination. ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है एस टी कॉलरेज का जो प्राइमरी सेकेंडरी इमेजिनेशन है उसका क्रिटिकल एनालिसिस है. आप ये सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ रिव्यू ऑफ एस टी कॉलरेज द इमेजिनेशन. Before imagination, which chapter's name you took actually? Before imagination. हम बात करेंगे अभी. I'll be talking about all the chapters which are important. Okay, I'm just giving an overview here. Otherwise, I'll talk about all the important chapters one by one. Then he's talking about truth and revelation theories, the two uses of language. Very, very important. ये पूरे किताब का gist है. The two uses of language. हमारा आधा क्लास इसी के ऊपर होने वाला है. And the last chapter is poetry and beliefs. Added with two appendix. One is on value and one is Mr. Eliot's poetry. Okay, so this is the complete overview of this principles of literary criticism. So we have already discussed about chapter 1. कि chapter 1 की जो starting है Henry 4 part 1 से लिया गया है जो line था. Then we will come to chapter number 3, which is about the language of criticism. Here he writes that poetry, like life, is one thing. Poetry is like life. Exactly ऐसे ही किसी ने इसके पहले भी एक quotation दिया था, poetry is the criticism of life. Right in the chat box ये किसके quotation है? Poetry is the criticism of life. Arnold. So here he writes, yes. So Matthew Arnold is absolutely right. So poetry, like life, is one thing. Essentially a continuous substance or energy. Poetry एक continuous substance है, continuous energy है. Poetry is historically a connected movement, a series of successive manifested interrelation. पूरा का पूरा quotation जो है एग्जाम के लिए important. Poetry is a historically यहाँ किसका सेंस मिल रहा है, कौन से क्रिटिक का हमें आइडिया यहाँ पे मिल रहा है? Right in the chat box. Poetry is historically a connected movement. Other than I.A. Richards, who talks like this? Eliot, sir. Yes, yes, very right. Tradition and individual talent. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि what kind of study he is doing. He is taking the ideas of Matthew Arnold. ये clear हमें पता चल रहा है कि किस किस को पढ़ा है I.A. Richards through these words. So from Matthew Arnold, then from T.S. Eliot, poetry is historically a connected movement, a series of successive manifested integration. Then he writes that the progress of poetry is, with its vast power and exalted function, is immortal. जो progress है वो कहाँ lie करता है? The progress of poetry is with its vast power. जितना ही ये powerful होगा उतना ही ये progress करेगा. So poetry को progress करने के लिए उसे powerful होना जरूरी है. और इसका function क्या है? An exalted function is immortal. The poetry should be immortal. कभी खत्म नहीं होना चाहिए. Poetry should remain immortal.
So these two quotations I found very important and have been asked in some of the exams. So this is all about chapter number 3. I'll not give you too much of information. Next is chapter number 4, which is about communication and the artist. So here he is talking about communication. Iska communication? Communication of the author. Author अपने आप को कैसे communicate करेगा reader? Through the work of art. So he writes that I. Richards, he says that all art is the medium of expression. कोई भी art हो, it is not only the written art. कोई भी art, पेंटर का हो, म्यूजिशियन का हो, कोई भी आर्ट हो, वो कोई ना कोई एक्सप्रेशन देता है, कुछ ना कुछ मैसेज देता है जिसे कम्युनिकेट करने की जरूरत है. And then he gives the example of a musician, and he says that music is a best art. Music is an art because through the medium of music, a musician can express his feelings and emotions. So music can also be a medium of communication. So in case of a musician, the medium of expression is sound. What is the medium of expression? It is sound. Because in the first line itself, he says that art is the medium of expression. हर जगह कोई ना कोई medium है. यहाँ पे medium sound है. Then he gives the example of a painter, and he says painting is also an art, like a music. Painting is also an art, and painter communicates his feelings and experiences through the medium of color and the brush. So in the same way, a literary artist, लिखने वाला जो artist है, he takes the help of words. Medium of expression is words, not the pen and brush, not the sound, but here the medium is words in order to express his feelings and experience. So here the literary artist is also a communicator like other artists. Thus, art is a supreme form of communicative activity. Very important quotation. इसने कहा है कि आर्ट जो है वो सुप्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेटिव एक्टिविटी है. Very, very important quotation. So now you will be able to identify when you read about this chapter. After chapter number 4, let's move on to chapter number 14 directly. The title is The Analysis of a Poem. So how we are going to analyze a poem, how we are going to understand the meaning of a poem. So Richards write that there are 3 qualifications of a critic. अगर किसी भी क्रिटिक को एक पोएम एनालिसिस करना है तो उसके अंदर क्या-क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? क्या हर कोई पोएम को एनालिसिस करने लायक बन सकता है या हर कोई क्रिटिक बन सकता है? So he gives 3 qualifications. First one, that he must have some skill, he must have some adaptation at experience. He must be an adept at experience. वो किसी भी चीज को एक्सपीरियंस कर सकता है. जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी बताया था, अपने जब पोइट्री का डेफिनेशन दिया था कि जो पोइट है उसे दूसरे के प्रॉब्लम को भी एम्पैथाइज करने आना चाहिए. He should be able to take the experience of the pains of others. Similarly, here also he writes that he must be an adept at experiencing without eccentricities, without fracking. Okay, Dr. I'll show the previous slide once I explain this. Okay, so without eccentricities, without fracking, if he is able to experience without fracking, the state of mind relevant to the work of art he is judging. Work of art he is judging. उसका जो माइंड है उस वर्क ऑफ आर्ट को जज करने के लिए रेलेवेंट होना चाहिए. दैट मीन्स ही शुड बी फ्रॉम द सेम फील्ड. लाइक अगर कोई पेंटर किसी पेंटिंग को जज कर रहा है तो इट इज हिज पैराडाइम ऑफ एक्सपीरियंस, वो उस एरिया से रिलेटेड है. बट अब एक पेंटर को बोलो आप कि म्यूजिक जज करो जाके, जैसे आप देखते हैं आजकल बहुत सारे रियलिटी शोज में होता है, डांसर जाके सिंगर को जज करते हैं. बहुत सारे बॉलीवुड डांसर्स
एक्टर्स एक्ट्रेस वो जाते हैं, जिनको खुद डांस नहीं आता वो जाते हैं जज करने कि सामने वाला कैसे गाना गा रहा है। जिंदगी में कभी गाना नहीं गाया बट दे आर गोइंग टू जज द सिंगर्स। दैट मीन्स देयर माइंड इज नॉट रेलिवेंट। अगर ऐसा हो रहा है तो दे आर नॉट द करेक्ट जज। यस, वेरी राइट। So the state of mind should be relevant to the work of art that he is going to judge. ये पहला क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आप जिस फील्ड से हो, जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है, उसी वर्क को आप जज कर सकते हो, उसी आर्ट को आप जज कर सकते हो, और आपके पास ऐसा स्किल होना चाहिए ताकि आप किसी भी चीज को एम्पैथाइज कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन। ओके, सेकंड वन, he must be able to distinguish the experience from one another as regards their less superficial features. हर वर्क ऑफ आर्ट का कुछ फीचर्स होते हैं। सुपरफिशियल का मतलब ऊपर ऊपर का, छिछला हुआ। सो ही मस्ट बी एबल टू डिस्टिंग्विश द एक्सपीरियंस फ्रॉम वन अनदर। मतलब उसे पता होना चाहिए कि एक आदमी का पेन क्या है, दूसरे का पेन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। He should be able to distinguish the pain and the sufferings and the happiness. He should be able to distinguish the experience. And the third one is he must be a sound judge of values. कैसा जज होना चाहिए? जिसके अंदर मोरल वैल्यूज हो। He should be a sound judge of values. जिसकी खुद की वैल्यूज नहीं है, जिसकी खुद की कोई मोरल वैल्यू नहीं हो, दूसरे को क्या जज करेगा? अब कोई मोटिवेशनल स्पीकर जाके किसी को मोटिवेट करना चाहे, खुद के अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई मोरल वैल्यू नहीं है, वो खुद सुबह 10 बजे उठता है और जाके बोलता है भाई 5 बजे उठो सुबह। तो खुद के अंदर पहले वैल्यू डेवलप करनी है। You must be a sound judge of values. So these are the 3 eligibilities for becoming a critic according to IHS. Very important from exam point. Okay, पहला उसके अंदर स्किल होना चाहिए, इसका चीजों को एक्सपीरियंस करने का, और वो उसी फील्ड से होना चाहिए जिस फील्ड को जज करने जा रहा है। दूसरा, he should be able to distinguish experience from one another, और तीसरा, he should be a sound judge of high moral values. इतना समझ आया? So write yes in the chat box so that I should not repeat at the later part of time. Okay, great. So what should be the business of a literary critic? Eligibility हमने देख लिया कि eligibility क्या है। Suppose हमने इस eligibility को qualify कर लिया। What next? What is our job? What is the job of a critic? Further, he writes that the business of a literary critic is to examine how communication takes from the literary artist to the reader. Literary critic का काम है ये चेक करना कि एक राइटर अपने वर्क को रीडर के पास कैसे पहुंचा रहा है। हाउ कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम लिटरेरी आर्टिस्ट टू द रीडर। आर्टिस्ट से लेके रीडर तक जो वर्क ऑफ आर्ट पहुंच रहा है, बीच का जो कम्युनिकेशन है उसको एग्जामिन कर। हाउ इट इज गोइंग टू रीच टू द रीडर एंड हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द रीडर। सो अ लिटरेरी क्रिटिक आल्सो एग्जामिन्स how the mind of a literary artist operates. एक तो कम्युनिकेशन वाला हो गया कि कैसे कम्युनिकेट हो रहा है मैसेज, ऑथर से लेके रीडर तक के बीच का मैसेज कैसे कम्युनिकेट हो रहा है, और दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा जॉब क्या है लिटरेरी क्रिटिक का, टू एग्जामिन हाउ द माइंड ऑफ द आर्टिस्ट ऑपरेट्स एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। जब वो जॉब को क्रिएट कर रहा है, कोई मूर्ति बना रहा है, कोई म्यूजिक बना रहा है, कोई बुक लिख रहा है, उस टाइम पे उसका माइंड कैसे ऑपरेट हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? जब उसके वर्क को इवेल्युएट करेगा। When he will do a critical analysis of his work, then he will be able to find out कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, because it's a psychological interpretation. क्लास के स्टार्टिंग में नहीं बताया था कि ये पूरा का पूरा वर्क जो है साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है। तो he is going to find out how the mind of the artist is operating at the time of operation. और जब वो रीडर के पास पहुंच गया, हाउ द माइंड ऑफ द रीडर वर्क्स एट द टाइम ऑफ रीडिंग द वर्क। जब उसी वर्क को रीडर पढ़ रहा है तो उसके दिमाग में क्या चल, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ लिटरेरी क्रिटिक।
again very important point from exam. Okay, पूरा का पूरा sentence इस तरह से आ सकता है. This is a quotation, direct quotation taken from the original text. That a literary critic also examines how the mind of a literary artist operates at a time of creation, and the mind of the reader works at the time of reading the work of literature. So this was all about chapter number 14. If you have any queries, doubt, raise your hand. Rest. Otherwise, write yes in the chat box. I'll move to the next chapter. Okay, because बहुत सारे chapter अभी खत्म करने हैं मुझे. Okay. So again, we will continue some more 2-3 points are there from the same chapter. To understand the real nature of poetry, अगर हमें पोइट्री के रियल नेचर को समझना है तो क्या करना पड़ेगा? We have to understand how the mind works in an experience and what sort of a stream of events and experience is going. How the mind works. किसका mind work कर रहे हैं यहाँ पे? दोनों का. We are taking into consideration the mind of the writer and the mind of the reader. How it is operating. And there are conflicting instincts and desires or appetences as he calls them in human mind. और यहाँ पे जब वर्क ऑफ आर्ट लिखा जा रहा है या वर्क ऑफ आर्ट पढ़ा जा रहा है तो माइंड में जो उथल पुथल हो रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जो डिजायर क्रिएट हो रहे हैं, अपेंटेंसीज जो क्रिएट हो रही हैं, he calls them as human mind. ये ह्यूमन माइंड का नेचुरल क्वालिटी है, ये होना ही चाहिए. और उसी को स्टडी करना है कि क्या हो रहा है, किस टाइप के कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्टिंक्ट आ रहे हैं, किस टाइप के डिजायर डेवलप हो रहे हैं. Because he says that man is often between conflicting pulls from different directions and consequently he suffers from mental uneasiness. आदमी जो होता है उसके दिमाग में हमेशा एम्बिवैलेंट आइडियाज चलते रहते हैं. मतलब कुछ गुड आइडियाज भी आते हैं, कुछ बैड आइडियाज भी आते हैं. Bad ideas ज्यादा आते हैं because as I usually say कि by birth we all are lazy, by default we all are lazy. By default the maximum negative ideas are created, but simultaneously there are the positive ideas as well. So here I.A. Richard says the same thing, that most of the times we have the conflicting ideas जिसमें कि पॉजिटिव वाला इधर खींचता है और नेगेटिव वाला इधर खींचता है. One is pulling towards the left and the other is pulling towards right. So they are pulling from the different directions. And consequently he suffers from mental uneasiness. So especially when he is writing the work of art or he is reading the work of art, वहां पे सबसे ज्यादा conflicting ideas circulate होते हैं. क्योंकि हम जब किसी वर्क को पढ़ते हैं तो हमारे अपने आइडिया भी क्रिएट होने लगते हैं. So sometimes we relate our own ideas with the ideas from the work of art. जब हम राइटर के आइडिया को अपने आइडिया के साथ मैच करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, then it creates a lot of conflicting situation. Okay, so the main function of art is to enable the human mind to organize. तो एक ऐसा आर्ट होना चाहिए जो हमारे थॉट प्रोसेस को डिफरेंट डायरेक्शन में पुल ना करे, उसको ऑर्गेनाइज करे. That should be the main function of art. And it should be able to do more quickly and completely than it could do otherwise. ये जो organize itself है, जो organize करना है human mind को, ये should be done quickly and completely. That is the real work of art. So again, very important point from exam point of view, what should be the function of an art? And then they can give the option. So the right option will be enable human mind to organize quickly and completely. So that is the main function of art. So अभी हमने पूरा समझ लिया स्टार्टिंग से कि किसी भी पोएम को एनालिसिस करना है तो सबसे पहले हमें एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि जो क्रिटिक है उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए. We have read about the 3 types of eligibilities that critic should have. Can we read about how we are going to judge a poem, how we are going to study the mind of the reader and the mind of the writer. And finally, what is the main function of art?
Okay, right? Yes, if you do understand, let's move on to the next chapter. Okay, so ये पूरा वर्क ऑफ आर्ट लिखने के बाद जो लास्ट सेंटेंस है विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर इज पोइट्री. अगर वर्क ऑफ आर्ट पोइट्री के ऊपर इंप्लाई किया जाता है, सो पोइट्री मीन्स वेयर बाय वी कैन गेन इक्विलिब्रियम, पीस एंड रेस्ट. अगर वर्क ऑफ आर्ट जो है हमको ऑर्गेनाइज करता है, हमारे माइंड को ऑर्गेनाइज करता है, तो पोइट्री हमें क्या करती है, हमारे माइंड को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखती है. पेंडुलम नहीं, इक्विलिब्रियम कंडीशन, पीस एंड रेस्ट. Now let's move on to the next chapter, chapter number 23, which is entitled Tolstoy Infection Theory. Okay, so exam में आ सकता है कि who has talked about Tolstoy's infection theory. ये कभी नहीं आएगा कि कौन से चैप्टर में है. Okay, so don't spend your time कौन से चैप्टर क्या है. But you should know that Principle of Literary Criticism has a chapter called Tolstoy's Infection Theory. सो हमारा जो वर्क ऑफ आर्ट है वो कब इन्फेक्टेड हो जाता है, तो आर्ट बिकम्स मोर और लेस इन्फेक्शियस इन द कंसिक्वेंस ऑफ 3 कंडीशन. यहाँ पे 3 कंडीशन बताए हैं जिसमें वर्क ऑफ आर्ट जो है, जो राइटर किसी वर्क को क्रिएट करता है, वो इन्फेक्टेड हो जाता है, खराब हो जाता है. कब कब खराब होता है? फर्स्ट, इन कंसिक्वेंस ऑफ अ ग्रेटर और लेसर पिक्युलैरिटी ऑफ द सेंसेशन. अगर किसी सेंसेशन को जरूरत से ज्यादा ही कन्वे कर दिया गया, जैसा आपने सुना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो जितना जरूरत है उससे ज्यादा ही कन्वे कर दिया गया, या जितना करना चाहिए उससे कम किया, तो वहां पे हमारा जो है वर्क जो है डिफेक्टिव हो जाएगा. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ बिकमिंग any work of art as infectious. Second one, in consequence of a greater or lesser clearness of the transmission of the sensation. Clarity में अगर कहीं प्रॉब्लम हो गया, अगर मैसेज ही क्लियर नहीं है, जो मैसेज देना चाह रहा है या तो बहुत ज्यादा क्लियर करने के चक्कर में है या बहुत कम क्लियरिटी है उसमें, तो भी वर्क ऑफ आर्ट जो है वो डिफेक्टिव हो जाए, क्योंकि सेंसेशन जो है वो पास, इमोशन जो है वो पास नहीं होता. एंड द थर्ड वन, Sir, yes sir, please. please first point. Sir, please first point explain again, sir. ओके, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं पोइट्री की, कि पोइट्री अगर कोई पोइट लिख रहा है तो क्या वो पोइट्री खराब हो सकती है. सो ही सेज कि यहाँ पे 3 कंडीशन हैं जिसकी वजह से वर्क ऑफ आर्ट, वो पेंटिंग है, म्यूजिक है या पोइट्री है, वो खराब हो सकती है. पहला है कि किसी भी वर्क ऑफ आर्ट में जो सेंसेशन कन्वे किया गया है, जो इमोशन और थॉट को कन्वे किया गया है, वो बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है और जरूरत से कम. अगर कोई गाना गाया जा रहा है, कोई सॉन्ग शूट किया जा रहा है, उसमें अगर गाने वाला जरूरत से ज्यादा ही अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर दे तो उसका एसेंस खत्म हो जाएगा. अगर कोई पोएट पोइट्री लिखते समय अगर सेंसेशन, थॉट और इमोशन को जरूरत से ज्यादा कर दे या जरूरत से कम कर दे, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम नहीं है वहां, देयर इज नो बैलेंस, देन इट मे बी अ डिफेक्टिव पीस. समझ गए? Okay, sir. Thank you, sir. And the third one is, in consequence of the sincerity of the artist, that is of the greater or lesser force with which the artist himself experienced the sensation which is conveyed. अगर sincerity में problem है, अगर जो artist है, if he is having more sincerity than requirement or less sincerity, greater or lesser force, then also it is going to create the problem in the sensation of the writer himself. Okay, so I'll repeat these 3 conditions once again. पहला, सेंसेशन जो है वो जरूरत से ज्यादा है या कम है. दूसरा, क्लियरनेस और क्लियरिटी ऑफ आइडिया, और थर्ड इज सिंसियरिटी ऑफ द आर्टिस्ट. 3 ही चीजें, 3 वर्ड नोट करने हैं. सेंसेशन ऑफ द पोएट, ग्रेटर और लेसर. क्लियरिटी ऑफ आइडिया, ग्रेटर और लेसर. सिंसियरिटी ऑफ द आर्टिस्ट, ग्रेटर और लेसर.
दोनों ही कंडीशन में रिटर हो चाहे लेसर हो, हमारा जो वर्क है, वर्क ऑफ आर्ट है, वो इन्फेक्टेड हो सकता है। एंड दिस इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज टॉल्स्टॉयज इन्फेक्शन थियरी। Okay, now let's move on to the next chapter, chapter number 30. Okay, anyone having any queries? यस सर, एक क्वेश्चन था, ये जो टॉल्स्टॉय इन्फेक्शन थियरी है, ये आई रिचर्ड्स ने दी है या टॉल्स्टॉय की दी हुई है? इन्होंने यहाँ पे ऐसे यूज किया है सर, ये नाम से थोड़ा कंफ्यूजन, मतलब इनके वर्क से ऐसे समझाने की। टॉल्स्टॉय थियरी क्यों क्यों ऐसे कहा है? हाँ सर, ये कंफ्यूजन। टॉल्स्टॉय का जो वॉर एंड पीस नोवेल था, उसके अंदर जो कहानी चल रही थी, आई नॉट गोइंग टू दैट डिटेल, उस कहानी को बहुत लोग क्रिटिक्स ने एनालाइज किया और उसको बताया कि ये जो नोवेल था ये काफी क्रिटिकल नोवेल था, जिसको समझना बहुत मुश्किल था, बिकॉज उसके अंदर प्लॉट्स हैं, उसके अंदर एक और प्लॉट है, प्लॉट अंदर सब प्लॉट, characters are keep on adding after one another, and there are more than I think 500 characters in that novels, so it is infected by so many problems. So those critics has criticized that novel. However, Leo Tolstoy has never used that term. Okay, but sir. Okay. उस टर्म को यहाँ पे लेके डिस्कस किया है रिचर्ड्स कि किस तरह से इन्फेक्टेड होता है कोई वर्क, ओके, किस तरह से कोई वर्क इन्फेक्टेड होता है। तो जिस तरह से लियो टॉल्स्टॉय का नोवेल इन्फेक्टेड था, उस तरह से कोई वर्क ऑफ आर्ट इन्फेक्टेड होता है तो उसे कहेंगे हम टॉल्स्टॉयज इन्फेक्शन थियरी। Thank you, sir. So now let's talk about chapter number 30, the definition of a poem. Again, very important chapter from exam point of view. So here a critic should often be in a position to say, अगर कोई क्रिटिक किसी पोएम को एनालिसिस कर रहा है तो उसे कैसा होना चाहिए। एग्जैक्टली जो टी.एस. इलियट ने आइडिया दिया था या फिर जो जॉन कीट्स ने आइडिया दिया था, ऑलमोस्ट सेम। ओके, सो व्हाट शुड बी द फंक्शन ऑफ अ क्रिटिक, व्हाट शुड बी द जॉब ऑफ अ क्रिटिक? ही शुड से दैट आई डोंट लाइक दिस बट आई नो इट इज गुड। ठीक, किस तरह से बोल रहा है? आई डोंट लाइक दिस, मैं जो देख रहा हूँ वर्क ऑफ आर्ट, ये मुझे तो पसंद नहीं है, बट इट्स अ गुड वर्क ऑफ आर्ट, बहुत अच्छा है, बट मुझे पसंद नहीं है। दैट मीन्स ही इज कीपिंग हिमसेल्फ अवे, इम्पर्सनैलिटी, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। और ये बोल सकता है कि आई लाइक दिस, मुझे पसंद है, बट फिर भी मैं इसको कंडेम करता हूँ। आई कंडेम इट बिकॉज ये ओरिजिनली खराब है, भले मुझे तो अच्छा लग रहा है बट वास्तव में ये खराब है, आई कंडेम। और ये बोल सकता है कि दिस इज द इफेक्ट which it produces upon me, and this quite different effect is the one it should produce. जो भी इफेक्ट इस वर्क ऑफ आर्ट से आ रहा है, इट्स इफेक्ट which is produces upon me, जो भी क्रिटिक के ऊपर जो असर डाल रहा है उसका इफेक्ट, and this quite different effect is the one it should produce. जो इसको प्रोड्यूस करना चाहिए उससे बिल्कुल अलग। That means altogether we can say that the artist function should be to keep himself away from his emotions, likeness and dislikeness, and be truthful, to say the truth. So he says that poem is the artist's experience. Poem जो है वो artist के experience से ही निकलता है। The most important chapter, as I said, is two uses of human language. So he is saying that even critics should distance himself or herself from the work of art. Like T.S. Eliot said that artists should distance from the work that he or she is producing. But here I. Richards is saying that critics should also do the same thing while analyzing any work. Yes, right. Absolutely. यहाँ पे जब मैं टी.एस. इलियट की बात कर रहा हूँ तो टी.एस. इलियट ने एक और ऐसे लिखा था, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, इफ यू कैन रिकॉल। वहां पे टी.एस. इलियट ने भी यही बात किया है। ओके, सो आई सजेस्ट यू टू गो एंड रीड टी.एस. इलियट्स फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एज वेल, so you will come to know that the ideas of T.S. Eliot and I. Richards are almost same. Okay, should we move on to the next chapter? I'll take 10 more minutes to finish it up.
we are left with 2 more chapters. Chapter 30 once again. ऐसा क्या है इसमें? ऐसा कुछ भी नहीं है चैप्टर 30 में. Okay, I'll explain again. चैप्टर 30 में केवल एक ही चीज है कि क्रिटिक का जो काम है वो कैसा होना चाहिए, क्रिटिक कैसे काम करना चाहिए. तो क्रिटिक को काम करना चाहिए कि अगर उसको कोई पोइट्री पसंद नहीं है, उसका डिसलाइकनेस है. सपोज मैं क्रिटिक हूं और मुझे रोमांटिक पोएम पसंद नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? ये पोइट्री खराब है वर्ड्सवर्थ की. बट नहीं, मुझे बोलना चाहिए कि मुझे ये पसंद नहीं है, बट ये जो वर्क ऑफ आर्ट है ये बहुत बढ़िया है. इट इज अ वेरी गुड, बिकॉज I am removing myself, my likeness and dislikeness. I remove myself. If I like Wordsworth poetry or romantic poetry, but मुझे लग रहा है कि जो कॉलरिज ने कुबला खान लिखा है वो बकवास है, बट मुझे पता है कि रोमांटिक पोएट्री मुझे पसंद है, even though I'll condemn it. मुझे पसंद है फिर भी मैं उसको कंडेम करूंगा बिकॉज वो है खराब. वास्तव में इट इज अ बैड वर्क. और इफ जो उसको इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए, एक रोमांटिक पोएट्री को जो इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए रीडर के माइंड में, अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, व्हाई शुड से कि नहीं कर रहा है. So that is the main function of a critic, which has appeared in chapter number 30, definition of a poem. Okay, I So think what I understood is that a critic should be biased, should not be biased. I mean to say, he should not be unbiased, biased. yes, That yes. yes. So this is the mean. Okay, great, very nice. So let's move ahead to chapter number 34, 2 uses of human language. So it starts with the comparison of science and literature. कि हमें अगर इस दुनिया में जीना है तो हमें साइंस को भी फोकस करना है और लिटरेचर पे भी फोकस करना है, बिकॉज साइंस इज आवर मैकेनिज्म ऑफ अनकवरिंग द वर्ल्ड फॉर आवर यूज टू इट. साइंस का मेन पर्पस क्या है? चीजों को एक साइंटिफिक नजर से देखना, किसी भी मिथ को रिवील करना, किसी भी रहस्य को क्लियर करना. तो साइंस इज अ मैकेनिज्म ऑफ अनकवरिंग द वर्ल्ड फॉर आवर यूज, whereas literature is our mechanism for finding our place in the world. साइंस का काम है सत्य को ढूंढना, फाइंडिंग द ट्रूथ इन द वर्ल्ड, एंड लिटरेचर इज द मैकेनिज्म फॉर फाइंडिंग द प्लेस इन द वर्ल्ड. वी नीड बोथ द थिंग्स. वी नीड बोथ द थिंग्स टू बी ह्यूमन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, साइंस इज आवर मैकेनिज्म ऑफ अनकवरिंग द वर्ल्ड एंड लिटरेचर इज द मैकेनिज्म फॉर फाइंडिंग आवर प्लेस इन द वर्ल्ड. हमें इस दुनिया में कैसे रहना है, कहाँ रहना है, that we will come to know when we read the literature. मतलब अगर हम अपने ancestors के बारे में पढ़ रहे हैं, when we read about the histories, तो लोग कैसे रहे हैं, कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ है, तो हमें अपनी लाइफ में भी उससे इन्फ्लुएंस मिलेगा. We will be able to find our place in the world. So the first thing that he brings out in this chapter is the comparison of science and literature. And then he talks about the language. Science का language क्या है और literature का language क्या है. Okay. So Richard's classification of scientific language and emotive language. Literature के language को he is calling as emotive language because it talks about emotion. Prose and poetry and knowledge and beauty are helpful when considering the theory of literature. So we should know about the different types of language. One is the scientific language, emotive language. That means the differentiation between the language of prose and poetry, knowledge and beauty. So this quotation is very, very important. We may either use words for the sake of reference they promote, or we may use them for the sake of attitude and emotion which ensues. हम अपने डे टू डे लाइफ में 2 तरह के लैंग्वेज यूज करते हैं. पहला जो है वो साइंटिफिक लैंग्वेज होता है, जो कि स्ट्रेट वे मीनिंग देता है, किसी चीज के बारे में ट्रूथ बताता है फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस दैट दे प्रमोट. और जो दूसरा लैंग्वेज होता है वो हमारे एटीट्यूड और इमोशन को बताता है, नॉट डायरेक्टली गिविंग द लिटरली. ओके, सो वी हैव 2 काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस. वन इज द साइंटिफिक एंड द सेकंड वन इज emotive. So he gives 2
kind of language, two kind of human language in this chapter, number 34. One is the scientific language and the second one is the emotive language. अभी हम पूरा ये चैप्टर जो है इसी के ऊपर पढ़ेंगे कि साइंटिफिक लैंग्वेज का फंक्शन क्या है और इमोटिव लैंग्वेज का फंक्शन. Okay, so first of all, let's talk about scientific language. Scientific language is used to give a reference of the real world and the true things in this world. For example, ये सारे के सारे example जो हैं वो original text से लिए हुए हैं. So he gives the example like a sentence written, it is 75 degrees. That means it is a reply to some question कि temperature क्या है. So it is 75 degrees. So it is giving a clear-cut scientific answer to this question. The ball weighs 5 pounds. This is another scientific language. जिसमें कि emotion से कोई लेना देना नहीं है. Whereas emotive language is meant to provoke emotional response in others. Emotive language जो है वो emotion को provoke करेगा, emotion को evoke करेगा. So fictions or poetry uses emotive language. Then he gives an example from Cloud Atlas. And the example is, travel far enough, you meet yourself. इतनी दूर तक जाओ कि वापस खुद से मिल जाओ. Okay, travel far enough, you meet yourself. इतनी दूर तक जाओ या खुद से मिल जाओ. Saleshi, I think a presentation is visible to all of you. If it is not visible, that may be the network problem for you. I request you to reconnect with the class and reconnect yourself. Okay, is it visible to all of you? Write yes in the chat box. Okay, thank you. So let's see the example once again. Travel far enough, you meet yourself. So here it is an emotive language. It's not a scientific language because it is not giving a clear-cut meaning. इतनी दूर तक जाओ कि आप खुद से मिल जाओ. You can meet yourself. So it provokes the emotion. It is giving some reflective meaning, not a literal meaning. Then he gives the second quotation from Brothers Karamazov. The line is, the mystery of human existence lies not in just staying alive. केवल जिंदा रहने में मिस्ट्री नहीं है. हमारा अस्तित्व क्यों है, हम ह्यूमन बींग्स का अस्तित्व क्यों है, वो इससे पता नहीं चलेगा कि हम जिंदा हैं. बट इन फाइंडिंग समथिंग टू लिव फॉर, पता इससे चलेगा कि हम जिंदा क्यों हैं, क्यों जिंदा हैं, जिंदा क्यों हैं. जो मिस्ट्री है वो इससे पता नहीं चलेगा कि हम क्यों जिंदा हैं, बट पता इससे चलेगा कि हम जिंदा क्यों. Okay, so you need to put your emotion to understand the meaning of such text. Another example is, my heart is under fire. ठीक है, अगर fire बोलूं तो आग समझ आती है, that's a scientific meaning or the literal meaning. But when I say my heart is under fire, that is giving a emotive or emotional meaning to the word fire. So he says that both scientific and emotive language can hold the truth. जो सच्चाई है वो scientific language में भी है और poetic language में. But the types of truth are different. A truth of science is when the things to which it refers to are actually together in the way in which it refers to them. जिसको वो रेफर कर रहा है उसी के बारे में बता रहा है. अगर वो साइंटिफिक ट्रूथ है तो यहाँ पे 75 डिग्री जो है वो टेम्परेचर को ही बताएगा और किसी को नहीं बताए. यहाँ पे बॉल 5 पाउंड का है तो बॉल का ही 5 पाउंड वेट है. दैट्स ए क्लियरिटी. तो जो साइंटिफिक लैंग्वेज है इट विल रेफर टू एक्चुअली व्हाट इट इज रेफरिंग टू. बट इफ इट इज अ पोएटिक लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ फिक्शन, वो क्या बताएगा? It may refer to something else which is not present at all. So a truth of fiction is the acceptability of things we are told. Their acceptability in interest of the effects of the narrative. जो हमें बताया जा रहा है, it depends upon
whether we are able to accept it, and if at all we are able to accept it, हमारा emotion उसको कैसे accept कर रहा है, because everyone's emotion is different, सबका emotion अलग अलग है. So how it is going to affect your emotion, that will be only decided by the acceptability of yourself. तो emotive language का acceptability जो है वो man to man differ करेगा, but scientific language का जो acceptability है वो remains same, because वो direct reference दे रहा है, direct meaning दे रहा है. Further, he writes about the language of poetry. Okay, scientific language हो गया, emotive language हो गया. Now he is going to talk about language of poetry. Language of poetry is purely emotive. Poetry का language purely emotive है in its original primitive state. This language affects feeling. ये poetry का जो language है वो हमारी feeling को affect करता है. Words in poetry have an emotive value. Poetry के अंदर जो words होते हैं उसमें emotive value है, and the figurative language used by poets conveys those emotions effectively and forcefully. अभी हम जब बात कर रहे थे metaphysical poets की, right? ये इसीलिए. So there we have saw a lot of use of metaphors, similes. So there are a lot of figurative language in the poetry. So when the figurative language is used by the poets, they in fact conveys the emotions effectively and forcefully. Okay, so now you will be able to identify such type of quotations in the exam if you understand कि ये सारी चीजें कहाँ से लिखे. So scientific language is used to reference the real things, true things in the world. What is the language of prose and poetry? So whether we are going to use a scientific language or a emotive language. जब हम prose की बात करते हैं तो प्रोज में किस टाइप का लैंग्वेज यूज करना है, और पोइट्री है तो पोइट्री में किस टाइप का लैंग्वेज यूज करना है. तो वेरी सिंपली रिचर्ड सेज दैट प्रोज इन कंपैरिजन टू पोइट्री इंट्रोड्यूसेस साइंटिफिक लैंग्वेज. प्रोज में साइंटिफिक लैंग्वेज है और पोइट्री के अंदर इंटायरली इमोटिव लैंग्वेज. वेरी सिंपल. पोइट्री के अंदर इमोटिव लैंग्वेज है, प्रोज के अंदर साइंटिफिक लैंग्वेज. सो in case of prose, it introduces scientific language and it pulls away from a completely emotive response. Scientific language के अंदर कोई emotion नहीं होता है, कोई emotive response नहीं होता है. Whereas poetry is fully emotive language based on emotion. So poetry can grasp a deeper set of emotions. Poetry से हम अपने emotion को बता सकते हैं और emotion को समझ सकते हैं. How that poetry does this function of grasping the emotion? How a poetry does grasping of the emotion? कैसे करता है poetry ये काम? Richard says that it thrives on our belief system. Belief मतलब हमें मानना पड़ता है. यहाँ पे जब belief की बात चल रही है तो I'll definitely like to quote Willing Suspension of Disbelief by S.T. Coleridge. S.T. कॉलरिज ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि अगर हमें पोइट्री का लैंग्वेज समझना है, पोइट्री की मीनिंग को समझना है, तो हमें अपने बिलीफ सिस्टम को सस्पेंड करना पड़ेगा. ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ आइडिया हियर इट्स गिवन बाय आई रिचर्ड्स कि अगर पोइट्री के अंदर जो इमोशन है उसको समझना है तो पहले अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, चीजों को बिलीव करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट साइंटिफिकली ट्रू. पोइट्री में जो लिखा है वो साइंटिफिकली ट्रू नहीं है. अगर आपको पोएट्री से कुछ सीखना है तो बिलीफ सिस्टम आपको बिलीव करना पड़ेगा. सो दिस इज हाउ द पोएट्री इज डूइंग इट्स फंक्शन. इट थ्राइव्स on the belief system. Now he gives an example of historical fiction. Okay, it is not a poetry, it is a prose. So he is writing about the example of historical fiction, and he says that okay, suppose that this historical fiction is set during American Revolutionary War, and it will use which type of language? Emotive language and scientific language. It may use scientific language and emotive language, but it distances itself from the reader's emotion. There is no emotion for the reader because it is a historical fiction.
it is talking about some scientific truth. It is talking about some scientific truth by asserting date, time, actual events, and then filling in between with the fiction. So, because it is talking about the historical fictions, the history, the prose, so emotion is missing here. So, the presence of emotive language, even though the poet tried to put here, reader will not feel any emotion. अगर कोई प्रोज राइटिंग है एंड सपोज कोई हिस्टोरिकल फिक्शन है जिसकी सेटिंग अमेरिकन रिवोल्यूशनरी वॉर में की गई है, उसमें अगर कोई पोइट चाहे भी कि मैं उसमें, पोइट तो होगा नहीं बिकॉज इट्स अ फिक्शन, सो अगर कोई राइटर चाहे, कोई नोवेलिस्ट चाहे कि मैं उसमें कुछ इमोशन डालूं, तो उस इमोशन को रीडर समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे एक साइंटिफिक ट्रूथ है, कुछ डेट्स दिए हुए हैं, कुछ ओरिजिनलिटी दी हुई है, तो वहां पे अपना बिलीफ सिस्टम जो है वो नहीं लगाएगा. सो सच टाइप ऑफ languages which is used for writing historical fictions or prose events, that is using the scientific language. Whereas the poetic language are used in a poem, and poem are tied to a set of belief. Poem are tied to a set of belief system that we already hold. Whatever the belief that we hold, we using that belief system. हम वहाँ पे मानते हैं कि चलो जो लिखा है उसे हमें समझना है, और जो भी लेसन वहां से मिल रहा है, जो भी प्लेजर मिल रहा है, एस्थेटिक प्लेजर मिल रहा है, चाहे आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है, आपको लेना है विदाउट आस्किंग व्हाई. WH क्वेश्चन नहीं लगाना है वहां पे, व्हाई, व्हेन, हु, आपको समझना है. You have to read in between the lines, understand the meaning, and accept the truth. So the poem's job is not to convince us that freedom and liberty are ideals we should follow. पोएम का काम ये नहीं है कि रीडर को कन्विंस करे कि आप जो सीख रहे हो, जो देख रहे हो, वो सच है. ये पोएम का काम नहीं है. पोएम का काम है हमारे बिलीफ सिस्टम को रीइंफोर्स करना. पोएम का काम है टू रीइंफोर्स द बिलीफ सिस्टम दैट वी ऑलरेडी हैव by triggering an emotional response to that. जब हम पोइट्री को पढ़ के अपना रिस्पॉन्स देंगे एज अ रीडर, जब हम अपने आप को रिस्पॉन्ड करेंगे, या हमें खुशी होगी या दुख होगा, some response, some emotion will come out when we read the poem. तो पोइट्री का काम है किसी को कन्विंस करना नहीं है. It is not going to convince someone because इसमें ट्रूथ नहीं है. There is no truth. It is fully builded upon the pillars of belief system. यहाँ पे belief system जो है वो supreme है. Okay, but when we are talking about any prose writing, any fiction writing, वहाँ पे scientific truth है. There you can ask the question, when, what is the date, what is the time, what is the actual event. But in poetry, poetry itself will not prove all these things. It will not convince the reader. It will not talk about the freedom and liberty of the ideas. Rather, it will only reinforce the belief when you respond to the reading of the poem. जब आप किसी पोएम को पढ़ के अपना रिस्पॉन्स देंगे, अपना इमोशन बताएंगे, तो आपका बिलीफ सिस्टम वहां पे समझ आएगा कि हाँ, आपने चीजों को समझा. आप मान लो कि कोई पोएम पढ़ रहे हैं और उस पोएम को पढ़ के आपको बहुत मजा आया, तो यू एक्सप्रेस योर फीलिंग. उससे पता चलेगा कि आपके अंदर कितना बिलीफ सिस्टम. बट अगर आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, यू रिमेन न्यूट्रल आफ्टर रीडिंग अ पोएम, दैट मीन्स आपका बिलीफ सिस्टम काम नहीं कर रहा है. यू आर नॉट एग्री टू बिलीव जो पोएम में लिखा है उससे मैंने कुछ सीखा. इफ यू आर न्यूट्रल. Further, illustrating his point by an image of magnetic compass. Here he is using another example of a magnetic compass. He says that there is a systemization of impulse which is necessary for the poise and balance. So you must know that in magnetic compass, which always remain towards the north and the south,
So there has to be a balance. Even in the magnetic compass, there has to be a balance. And when we talk about the impulses मतलब हमें कुछ करने की इच्छा जो होती है, impulse. Because here we are talking about the belief. Belief कैसे जगेगा? How will you create the belief? So belief is coming through impulses. And when we are able to systemize our impulses, it is going to create a poise, shanti, peacefulness, calmness, confidence, poise and balance. When we are going to produce our impulses of creating belief system. And how the belief system is created? When we express our emotion after reading the poetry. So he says that emotion make experiences. When we express our emotion, वो experience में बदल जाता है. एक अच्छा experience भी हो सकता है, बुरा experience भी हो सकता है. And emotions are better realized and expressed through poetry. रीडर जो है उस इमोशन को रियलाइज कर सकता है और राइटर जो है उस इमोशन को एक्सप्रेस कर सकता है. और जो पोएट है ये सारा काम अपने वर्ड से करता है. The poet does all this with the help of words. But sometimes रीडर जो होता है उस वर्ड की मीनिंग को इंटरप्रेट करने में गलती कर बैठता है. He does a misinterpretation while doing interpretation of the poetry. So because of that, it leads to misunderstanding and underestimation of it. And why it is happening? Due to overestimation of thought into it. जो उसके अंदर थॉट डाला गया है उसको ओवर एस्टिमेट कर रहा है, जरूरत से ज्यादा एस्टिमेट कर रहा है. कल भी हमने यही पढ़ा. When the reader is going to either underestimate or the overestimate, it is not going to suffice the purpose. So I have taken this quotation just to prove the point which is written above. अभी तक जितना मैंने explain किया वो कहाँ से मैंने लिया है, that I have taken from these quotations, where I.A. Richards says that it is never what a poem says which matters. It is never what a poem says. पोएम कह क्या रहा है वो मैटर नहीं कर, बट वो पोएम है क्या, दैट इज द मैटर. बट व्हाट इट इज, दैट इज द मैटर. बिकॉज क्या कह रहा है वो तो रीडर डिसाइड करेगा ना. रीडर अपने से इंटरप्रेट करके डिसाइड करेगा कि पोएम क्या कह रहा है. बिकॉज हर एक रीडर के लिए उसका मतलब जो है वो अलग अलग है. हर एक जो रीडर है वो अपने आप को अलग अलग तरीके से कनेक्ट कर सकता है. किसी के लिए वो कोई कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होगा, किसी के लिए कोई पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होगा, किसी के लिए सोशल कॉन्टेक्स्ट होगा. तो हर एक रीडर का जो परसीव करेगा उस पोएम को वो बिल्कुल अलग होगा. सो दैट्स व्हाई I.A. Richards says that it is never what a poem says which matters, but पोएम है क्या, that is the matter. उस पोएम की क्वालिटी ऐसी है क्या जो रीडर में इमोशन पैदा कर सके. बिकॉज द पोएट इज नॉट राइटिंग एज अ साइंटिस्ट. पोएट जो है वो साइंटिफिक लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहा है, वो ट्रूथ नहीं बता रहा है किसी को. इज नॉट राइटिंग एज अ साइंटिस्ट. ही यूजेस दिस वर्ड्स बिकॉज द इंटरेस्ट व्हिच इज द सिचुएशन कॉल्स इनटू प्ले कंबाइन टू ब्रिंग देम. जिस सिचुएशन में पोएट है उस टाइम पे जो भी उसके दिमाग में आ रहा है उसको अपने वर्ड में बता रहा है, जस्ट इन दिस फॉर्म ऑफ पोएट्री इनटू हिज कॉन्शियसनेस as a means of ordering, controlling and consolidating the whole experience. जिस कंडीशन में वो बैठा है और उसका दिमाग में जो भी जिस ऑर्डर में चीजें आ रही हैं उसको कंट्रोल करते हुए, अरेंज करते हुए, कंसोलिडेट करते हुए अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करता है. तो इट डज नॉट टॉक अबाउट एनी साइंटिफिक यूज ऑफ लैंग्वेज. Further, he says that the systemization of impulse is necessary. हमारे impulse को एक systematic ढंग में आना जरूरी है to maintain a poise and a balance. Then he talks about emotion. As earlier also we have said that emotion makes experience, and emotions are realized and expressed through poetry.
This can be a very good question. It has been taken directly from the original text. This is a quotation. Emotions make experience, and emotions are realized, expressed through poetry. And the poet does all this with the help of words. That was all about chapter number 34. Next is chapter number 35. Okay, that's the last chapter. So Richard says that this chapter is about poetry and the belief system. Just now we are talking about the same thing. So he brings that part here in the 35th chapter also. He says that a good poem does not need to assert something for the reader to understand it. एक अच्छा पोइट्री जो है वो खुद assert नहीं करेगा. Assert का मतलब कोई दावा नहीं करेगा कि मैं क्या ट्रूथ कह रहा हूँ. So assertion is almost always unnecessary. जब हम पोइट्री की बात करते हैं तो पोइट्री किसी भी चीज का दावा नहीं करता है, असर्टमेंट नहीं करता है, असर्शन नहीं करता है कि जो पोइट्री में लिखा है वो ट्रू है. असर्शन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अननेसेसरी. अकॉर्डिंग टू आई रिचर्ड्स यहाँ पे कहते हैं कि जो असर्शन है पोइट्री के अंदर वो जरूरी नहीं है. If we look closely, we find that the greatest poets, as poets, though frequently not as critics, refrain from assertion. अगर हम बड़े बड़े पोइट्स की बात करें तो बहुत बड़े बड़े जो पोइट हुए हैं सबने दावा करने से बचा है. सब कोई भी दावा नहीं करता है कि जो मैं पोइट्री लिख रहा हूं, जो फैक्ट लिख रहा हूं वो ट्रू है. Even the greatest poet has taken refrain from assertion. They are not asserting anything. Poetry should understand our implicit belief and thrive on that. It is totally about our implicit, not explicit. Implicit, not explicit. It is our implicit belief system. Then he says further, beliefs are slippery. Beliefs are slippery. Belief system जो हमारा slippery है. It is not fixed. Why? Because they can be political, they can be scientific, or they can be a poetic. किसी के अंदर साइंटिफिक बिलीफ सिस्टम होता है, वो बोलेगा नहीं मैं तो जो सच है उसी को मानूंगा, पोइट्री के अंदर जो लिखा वो नहीं मानूंगा. That means his belief system is scientific. कोई कहेगा कि नहीं हम तो जो पोइट्री में लिखा हमें तो मजे लेने हैं, so he will agree to that. His belief system is poetic. Someone is having a political belief system which talks a differentiation between socialism and capitalism. इस टाइप के मार्क्सिस्ट थियरिस्ट वाले जो हैं, मार्क्सिस्ट दिमाग वाले हैं, they will have a political kind of belief system. So that is the reason he says belief is slippery. And finally, the last stanza of this chapter talks about the differentiation between knowledge and beauty. Knowledge or beauty में क्या differentiation है? So he concludes this chapter by making the distinction between knowledge and beauty. ये भी question आ सकता है, to which critic talks about the distinction between knowledge and beauty. Okay, so here he says that knowledge is a scientific truth. Knowledge जो है वो scientific truth की बात करता है. जब भी हम किसी नॉलेज की बात करेंगे तो नॉलेज बिलीफ सिस्टम पे बेस्ड नहीं होता. नॉलेज इज नॉट बेस्ड ऑन द बिलीफ सिस्टम. ओके, ब्यूटी इज ट्रूथ वी फील फ्रॉम द आर्ट. ब्यूटी इज द ट्रूथ दैट वी फील फ्रॉम द आर्ट, एंड दिस आर्ट कैन बी आर्ट ऑफ पोएट्री. तो पोएट्री के आर्ट से हम ब्यूटी को समझ सकते हैं. And beauty is also a kind of truth, but this is coming from the art through the belief system. तो यहाँ पे knowledge और beauty को compare किया है just to explain the relation between prose and poetry. तो यहाँ से ये question भी बन सकता है, who says knowledge is scientific truth? Who says beauty is truth? We feel from the arts. तो मैंने वही sentences लिए हैं जो exam के view से काफी important हैं. All other things I have rejected, even though this chapter has become so long that we have to continue for 2 days. Okay, so I hope itna चीज समझ आ गया होगा.
write yes in the chat box if you do believe that you have understand.